During the latter half of the 18th century, a dark shadow fell across the land. On one side were ranged the armies of several rulers, crudely armed and lacking cohesion. On the other, the forces of the foreigner, equipped with the latest weapons of destruction. And the leaders put the question to Britain, how can we fight for freedom when we have no freedom ourselves? At the stroke of the midnight hour, a moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. There were people who came from India to Europe as volunteers to fight for the British Empire. And this bike has its history completely in military defense and ammunitions, because it was actually a company that used to manufacture firearms and rifles and cannons and these kind of things, machine guns. So it was very much in its nature to be associated with battlefield in general. So in those moments where these soldiers returned back to India, the civilians associated with the military, it's patriotism, that's where it comes from. The Royal Enfield motorcycle has become a complex and multi-layered symbol in modern India. Since its beginnings as the product of munitions and arms manufactured during British imperial rule to an Indian-owned icon, it has gone through multiple transformations and became an emblem of aspiration, status, and social mobility, predominantly among Indian men. In this film, we intend to unpick the entangled layers of social history, interwoven narratives of independence and post-colonialism, including notions of masculinity, economic aspiration, and personal narratives of Royal Enfield owners, those who work with them and those who aspire to own one. During the Independence Day, like, we'll have this thing to start off with, and then everybody unite together, and they completely go for a ride that could be around 150 kilometers or 200 kilometers. That's what Royal Enfield brings among people, that unity in diversity, and like, this is how crazy people are for the Royal Enfield brand. देखिए, मेरे पास रॉयल इनफील्ड है, 500 सीसी की है, जो कि सबसे टॉप मॉडल में है। कि मेरे फ्रेंड सर्किल में लगभग मेरे ही पास रॉयल इनफील्ड है, बल्कि मेरी गाड़ी को मांग करके वो लेके जाते हैं कि आपकी गाड़ी दो यार हमारे को, क्योंकि इसका जो साउंड है ना, वो अलग ही तरीके का है। इसके साउंड की वजह से बहुत परफेक्ट गाड़ी है ये, दमदार साउंड है इसमें। आसपास चलने वाले को हॉर्न लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। जब हमारी गाड़ी आती है तो ऑटोमेटिक ही हॉर्न देती हुई निकलती है और सभी लोग साइड हो जाते हैं। लोकल ग्रुप्स भी है, जैसे कि नाम है एयरबोर्न राइडर्स ग्रुप है जयपुर में, राजस्थान इनफील्ड क्लब है जो सिर्फ रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल चलाते हैं। उनके ग्रुप में जितने भी राइडर्स हैं वो सिर्फ रॉयल इनफील्ड यूज कर रहे हैं। देन वो प्लान भी करते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, वो कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। So my father always wanted to be in the armed forces, but he always taught us, raised us in a way that an army man would. So he taught us discipline, to be courageous, to be on time, having civic sense, and to live life in large terms and not to keep it small. So those are the things that have been embodied in me. And when you look at Royal Enfield, the philosophy is quite similar. The bike is big, it's loud, it speaks for the military. If you see the army personnel driving it, when we were small, we would see those army men. So that's one of the reasons I have always wanted to have this motorcycle. If you go to Royal Enfield's ethos, it's made like a gun. And that's how I think about myself. Made like a gun, very accurate, to the point. When it shoots, it just shoots and shoots to kill. So that's the, I think, philosophy of mine, and what Royal Enfield also says. So in a way, it's an extension of me.
this motorcycle. We are both born to kill. Royal Enfield has a distinct identity. It's not like any other bike. Owning a Royal Enfield is like you own it and it's a part of your identity and it signifies something. I think younger people are more drawn towards it because of its prestige, the way it's just been in Indian culture for a while. And considering it's been a part of the military as well as the civilian life for almost half a century now. So it just, everyone just wants one. Everyone likes it. And especially the younger guys, they want the bike which are more inclined towards, adventure, road trips. They like this stuff. एंड अगर मैं बड़ा होकर कोई बाइक खरीदूंगा तो मैं ओल्ड वर्जन ही खरीदना चाहूंगा और ये बाइक इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये इंडिया की नंबर 1 बाइक है। रॉयल इनफील्ड का एक जो इंडिया में एक रिश्ता है वो बहुत अलग है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड हमारा इंडिया का ब्रांड है, इंडिया की ये मोटरसाइकिल है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे रॉयल इनफील्ड का आज भी ये लगता है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस है इंडिया की, उनकी फर्स्ट चॉइस आज भी रॉयल इनफील्ड है। वो आज भी रॉयल इनफील्ड चला रहे हैं। मैं खुद जब हम रोड पे जाते हैं ना, किसी गांव में से निकलते हैं, तो मतलब चिल्ड्रंस जो होते हैं वो हम जा रहे हैं, वो हमारे को हाई कर रहे हैं, मोटरसाइकिल देख के वो हमारे को रोक रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पे बैठ के पिक्चर क्लिक्स करवा रहे हैं। रॉयल इनफील्ड इज नॉट ए मोटरसाइकिल, इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन। मेरा जब मैं बचपन में स्कूल में जाता था, देन हमारी छुट्टी होती थी, हम 4-5 दोस्त एक साथ निकलते थे। कोई भी पहले रॉयल इनफील्ड कंपनी मेरे माइंड में थी नहीं, तो ये सोचता था कि हाँ वो वाली मोटरसाइकिल लूंगा जिसमें से वो आवाज आती है ना, डुक 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 डुक, कि एक अलग सा एक लगता है कि इसका जो साउंड है, ऐसा लगता है कि हम भी कभी इसको चलाएंगे, मैं भी ऐसे उस मोटरसाइकिल को चलाऊंगा, लोग मुझे भी देखेंगे। हिंदुस्तान में तो इसकी नंबर 1 पे चल रही है अभी ये गाड़ी, और गाड़ियां सारी फेल है इसके सामने। बहुत कंपनियों ने इसकी डुप्लीकेटिंग करवाई लेकिन सक्सेस नहीं हुई। वो सक्सेस आखिर में यही हो रही है, गाड़ी जितनी तारीफ करो कम है। मुझे रॉयल एनफील्ड की सबसे बढ़िया तो उसकी एक आवाज़ है, उसका साउंड है, वो ही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। जो इसका साउंडनेस है वो किसी गाड़ी में और मन नज़र नहीं आता। जो इसका मतलब किसी भी बाइक में वो चीज़ जो रॉयल एनफील्ड के अंदर है वो किसी में नज़र नहीं आती। मजबूताई है, अच्छी है, कंफर्टेबल है, चलने में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता है आदमी चलाना, तो बहुत बढ़िया बाइक। अब इसलिए इसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि नया जो युवा यूथ है ना, उनकी पहली पसंद हो गई है। लड़कियों को बिठा के घुमाना उनको एक शौक हो गया है, और लड़कियां भी पसंद करती है ना। जिसके पास रॉयल इनफील्ड है ना, उस लड़के को लड़की पसंद करती है। खास बात तो ये है। पीछे हमारे साथ एंजॉय के हिसाब से हमारे पास हमारी वाइफ भी बैठती है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। जैसे इनके साथ ऐसे लगते हैं जैसे जन्नत में घूम रही हूँ, लगना भी चाहिए। लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ, जब अच्छा मौसम होता है तब घूमने निकलते हैं तो और भी अच्छा लगता है। आसपास के लोग ऐसे देख के खुश होते हैं, हमारी तरफ ज्यादा देखते हैं। Royal Enfield, unlike any other thing, has a value attached to it. You treat it like a person. You don't treat it like a product or something like that. ये बात है 2015 की, तब मैंने गाड़ी ली थी। तो हमारा इसका 3 महीने का वो दिया था टाइम कि 3 महीने बाद में आपको गाड़ी मिलेगी। फिर हम कंपनी में गए, गाड़ी ली। सर्वप्रथम हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा होती है। हम दोनों गाड़ी को लेके गए गणेश जी की पूजा अर्चना कराई। पंडित आया, इस पे वो लगाया उसने तिलक वगैरह, रोली मोली चावल से इसकी पूजा करी। और नारियल होता है, नारियल इसके ऊपर भेंट चढ़ाई हम लोगों ने। वहां से आने के बाद में माला वगैरह सजा के लेके आए हम लोग यहाँ पे। और घर में हमारी जो बहन बेटियां होती है, पूरा देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि हाँ नई गाड़ी आ गई, नई गाड़ी। एक उत्साह होता है। तो हमारे बच्चियों को, आपकी तरह हमारी एक बच्ची है, उनको भेंट दी हमने, जो शगुन के तौर पे भेंट होती है उनको वो दी। बेटे बहू को भी दिया हमने पैसा वगैरह। तो उनको बहुत अच्छा लगा, फीलिंग अच्छी आई मतलब। और जो ये हमने टाइगर लगा रखा ना, हम माँ जगदम्बा को मानते हैं। माँ जगदम्बा का वाहन है शेर। तो हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो माँ जगदम्बा आगे रहती है हमारे से, इसलिए शेर की सवारी करते हैं। और ये रॉयल इनफील्ड भी एक शेर से कम नहीं है, पैंथर से ज्यादा तेज दौड़ती है। क्योंकि जब कोई गाड़ी चलाता है तो टाइगर की तरह फील आता है इसमें बैठने के। और जो
हेल्दी पर्सनालिटी वाला ही आदमी बैठ सकता है। I named it Aslan, and I named it Aslan over the lion of the Narnia lion, because when it's on the road, it roars, makes its own way. I mean, that's the case with the Royal Enfield. That's the thing with the Royal Enfield's sound. It has a very distinct sound, even when you're riding at 20 kilometers, which is like really low. It's a respect that you get. It's a respect that the bike gets. Indian masculinity is absolutely like Royal Enfield only. Like, you are ready for all the terrains. उनको पता है कि अगर उन्हें कहीं पे भी घूमने जाना है, जैसे कि वो प्लान करते हैं किसी भी ट्रिप का, लाइक पहाड़ों में या साउथ में, वो कहीं पे भी कोस्टल रूट कर रहे हैं या माउंटेन रूट्स कर रहे हैं, तो उनके माइंड में रहता है कि वो रोड, वो सारी चीजें कवर करने की जो कैपेसिटी है वो रॉयल एनफील्ड में है। रॉयल एनफील्ड इज लाइक एन ऑल वेदर बाइक, and that is what it symbolizes, and that is what is expected from men also in India. You have to give your best in like all places and all temperatures. मेरे को बहुत अच्छा फील होता है इस गाड़ी को चलाने में। जब मैं गाड़ी रॉयल इनफील्ड चलाता हूँ तो अपने आप को मैं रॉयल ही समझता हूँ, और कुछ पर्सनालिटी भी ईश्वर ने दे रखी है कि रॉयल इनफील्ड पे थोड़े से रॉयल ही आदमी बैठते हैं। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। It's not something very godlike, where if you're driving like a cool bike, you should be given that sort of stature from everybody else. Because, okay, you drive a bike, so what? But I think the association with bullets, especially here, is tied to like, proper masculinity. So when you are riding a Royal Enfield, okay, a bike which is not a super bike, okay, you are trying to tell the other person that, look, I am reliable also, and I have the strength also. If needed, I can put my foot down and I can get the work done. Yeah, I mean, it's a normal bike. What more do you want from it? It's like, it's pretty cool. I would factor in the coolness of it. If you tie your identity to like a bike of sorts, it just seems very weird for me. Okay, you can do so much more with that masculinity thing. Like, it's not just about, riding a cool bike. It's more about what sort of like morals and ethics you have. I do not agree with that any person who has just got money can actually buy it and ride it, because I attach a lot of other values along with it. But people look at it only as a bike, which is like a sort of a very near to a super bike experience that you can have on Indian roads. This is what we have been taught since the beginning. Don't trust people, especially not men. The only solution that people give you is to like cover up. And yeah, it was like, the victim blaming thing that, people do. It restricts your individual, what do you call it? Freedom. I associate freedom with like just being free to like do whatever, doesn't matter the consequences. I would define my identity with it as freedom. You just want to live. You just want to go on the mountains. You want to ride. You want to see the scenery, like all sort of that feeling that comes. If the life is too hectic, or if something you are not able to sort out your thing, so it's like riding on a bike, going on a bike is sort of a meditation also. Like, it clears your head, it gives you a perspective, it tells you what are your priorities, and you and your bike, you form just one body. There is always a song. You can just like turn off your brain and then just go somewhere, listening to some tunes, having a long drive. It gives you time to like think about a lot of stuff. I mean, I am pretty much an overthinker, so I tend to overthink a lot of things. But that's like one of the, as I said, buffer time that you get to like just be completely alone with your thoughts. And you can just, nobody is judging you there, nobody is doing anything. It's just your personal time. There is a visible and tangible disparity in the economic status between those who own a Royal Enfield and those who work as mechanics, particularly those who work in unauthorized Royal Enfield sectors. A new Royal Enfield bike
can cost anywhere between 150,000 and 400,000 rupees and don't depreciate in value as other vehicles do, with older bike models signaling greater kudos. Many of these mechanics, with no authorized training, acquire the skills and understanding of these bikes, with knowledge often passed down through generations and working hands on, developing an intuitive connection and appreciation for the engineering of Royal Enfield motorcycles. It's kind of a legacy. It's a legacy for youngsters. It's a legacy for the older people, and combining them. मुझे 35 साल मुझे हो गए काम करते हुए और फादर को करीबन 50 साल से भी ऊपर हो गए। तो हमारी यही दुकान है, करीबन 40 साल से यहाँ दुकान है, ठीक है? और हमारा काम है रॉयल एनफील्ड का काम है और करीबन तब से मैं काम करते आ रहा हूँ फादर के टाइम से। पहले वो करते थे, अब मैं करता मैं जैसे कि इधर काम करता हूँ, तो मैं इसलिए काम करता हूँ, मेरे पापा की हेल्प के लिए मैं स्कूल जाता हूँ, फिर वहाँ से रिटर्न आती हूँ, तब यहाँ पर काम